Hello class 3. According to our syllabus, our first chapter is chapter 7, staying safe. Okay? Means how we have to stay safe both at home as well as outside home. Okay? Now come to the book. Sometimes while going to school you find a traffic jam on the road. Yes, many times we find that there is a jam, a traffic, isn't it? When you move ahead, little ahead, you find that the jam is caused due to an accident between two vehicles. Sometimes the jam may be created due to an accident. Okay, means two vehicles get crossed, get collided, and lots of people came there. They make the road totally blocked, isn't it? Accidents are any unforeseen mishappenings caused due to carelessness. So what is accident? Accident means कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, ओके, और जिसका मेन रीज़न होता है केयरलेसनेस. मीन्स जब भी हम लोगों को लापरवाही से कुछ भी इंसिडेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट. They cause discomfort to the persons directly affected and also to many other people around them. So this not only affect the people but the people that surrounds them, isn't it? Means ये सिर्फ जो people का accident हुआ है या जो car का accident हुआ है, that is not the suffering. They may suffer, but the people that surrounds them, they also get suffer, isn't it? Sometimes people get so severely hurt that they suffer throughout their life. Yes, of course, कभी कभी accident जो है very dangerous भी होता है, isn't it? They may cause many effect, isn't it? They cause great loss for a person, either by death or by fractures, many things. Okay. So पीपल जो है वो सफ़र करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि एक्सीडेंट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इजंट इट? माइनर एक्सीडेंट इज क्योरेबल बट मेजर एक्सीडेंट मे कॉज अ ग्रेट लॉस फॉर हिज और हर थ्रू आउट हिज लाइफ, इजंट इट? नाउ we can avoid accident by being extra careful and following safety rules at all places. So हम लोगों को सभी प्लेस में केयरफुल, सिक्योर, प्रोटेक्टिव हर वक्त रहना ज़रूरी है. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज सेफ्टी एट होम. हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ एट होम. नाउ नेवर पुट योर फिंगर्स इन टू प्लग पॉइंट्स और टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड्स और विथ बेयर फीट. सो ये तो हम लोगों को पता है, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि वेट हैंड्स, गीला हाथ से कभी स्विच में ऑन नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. ओके, ऑल्सो रिमेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम ओपन और लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स और एनी इक्विपमेंट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक वायर्स. द नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल थिंग्स, एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स. और जो वायर्स खुला है दैट इज़ मोर डेंजरस. ओके, अदरवाइज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. What will happen if we will touch that? It may give an electric shock. That is not good at all, isn't it? Electric shock जो है वो कभी कभी people का life को भी ले सकता है, isn't it? Now, number 2, be careful while walking on wet floors. Never run on them. You might slip on the floor and get hurt. बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लोर पे जो है वाटर स्प्लिट किया रहता है एंड वी डिडंट रिकॉग्नाइज इट एंड वी रन, इजंट इट? सो व्हाट हैपेंड? वी गेट स्लीप, इजंट इट? सो दिस मे ऑल्सो कॉज एन एक्सीडेंट. तो हम लोगों को मीन्स हम लोगों को कभी भी वेट फ्लोर्स में दौड़ना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, नंबर 3, do not leave your toys, bags, books and other things lying on the floor. You or someone else might trip over them and get hurt. Now the third one is do not litter your things here and there, isn't it? हम लोगों को जो भी belongings है, जो भी toys, bags वगैरह है, वो सब हम लोग प्रॉपर प्लेस में रखेंगे. बिकॉज अगर वो फ्लोर में इस तरह से गिरा रहता है then anyone can fell, isn't it?
कोई भी उससे गिर सकता है and that may cause an accident. Now, the fourth one is keep away from fire. Playing with fire is dangerous. So never play with fire. Next, do not play with sharp objects like knives, blades, needles, etc. You might hurt your finger. Next thing is sharp objects, isn't it? Blade, scissor, then knives. These are all sharp objects. You should not play with that. Do not run while climbing up and down the stairs. You might fall and injure yourself badly. हम लोग stairs में चढ़ते हैं, isn't it? But what happened? Some children used to run, isn't it? So running on the stairs is not safe. Now, do not take any medicine without your parents or doctor's advice. Very good. Means we should not take any medicine unless and until doctor advised us. Okay. Now, do not touch any other chemical like phenyl or mosquito repellent lotion without your parents' permission. So, आप लोगों को कभी भी कुछ भी chemical appliances means phenyl हुआ, phenyl or something disinfectant जो होता है chemicals, वो सब हम लोगों को touch नहीं करना चाहिए because it is harmful. Okay. Now the last one is remain where you are when the electricity goes at night. You may trip over the furniture and get hurt. Wait till an elder lights a candle for a torch. So what happened? जब भी load shedding होता है तो what we do? We usually panic. We get panic, isn't it? We go here and there. So don't do that. Let the elder come. means बड़ों को आने दो, light on करने दो और torch on करने दो. Then only you will move. Because dark में अगर move करोगे, अगर अंधेरे में, then you can get fall over something and you will get hurt, isn't it? So let's stop till here. Thank you.